Dear students, myself Dr. Suresh Singh from Government Senior Secondary School, NIT 3 Faridabad. Today my topic of lecture is peak value, mean value of AC voltage and currents. पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ स्टडी किया था, I want to discuss that first with you. Dear students, in the last lectures we have studied, we have taught the following things. Number one, the basics of alternating current. The next one, difference between DC and AC. What were the basic difference between AC and DC? For example, DC was a direct current and AC is a alternating current which travels in both the cycles, positive and negative. But DC travel in a uniform direction only, in a single direction only. That's why it is called DC. Now, third one, graphical representation of alternating voltage and current. So, as far as graphical representation was concerned, पिछले लेक्चर में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरीके से करंट ट्रेवल करती है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन टाइम फैक्टर we have calculated and shown on a graph. So this was a topic we have discussed yesterday. मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये समझा होगा और इसकी प्रैक्टिस की होगी. आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, today's lecture is, the scope of the lecture is number one, peak values of alternating voltage and current, and mean or average values of alternating voltage or current for half cycle as well as for the full cycle. These values are plays an important role in alternating current, because without using these values we cannot explain alternating current effectively and successfully. As far as the first topic of my lecture is concerned, the peak values of alternating voltage and current. Now first question arises, what are the peak values? How we can define the peak values? This is a major question. Now I am defining this. What is a peak value? What does we mean by the term peak values? As it is shown in the slide here, it is defined as that maximum value of alternating voltage or current attained in either side during one complete cycle of alternating current or voltage. I am repeating again. It is defined as the maximum value of alternating voltage or current. किसी भी वोल्टेज और करंट के साइकिल में कोई करंट कितनी मैक्सिमम वैल्यू या कोई वोल्टेज कितना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है या ऑब्टेन करता है, उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं, ड्यूरिंग फुल कंप्लीट साइकिल और ड्यूरिंग हाफ साइकिल, एज इट इज़ अ केस मे बी. नाउ एज वी नो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ instantaneous voltage and current we have discussed earlier, the general form of equation of voltage and currents are E equal to E0 sin omega t, equation number 1, and I equal to I0 sin omega t, equation number 2, where E0 and I0 known as peak values of alternating voltage and current. Here we want to discuss E0 and I0 separately. As shown in the figure in the next slide, the figures shown are for the two, I have shown the two curves here. One curve is with the red color and other curve is with the blue color. The red color represent the voltage, how the alternating voltage travel in a cycle, and the blue color curve shows the current, and the equation of voltage and current are separately indicated on the slide as given. I equal to I0 sin omega t, E equal to E0 sin omega t. Dear student, I may remind you, in a previous lecture I have defined this curve, this very curve, for the graphical representation of alternating voltage and current. So here again we can discuss the same thing. As we start from 0 and to t, there are several points, 0, t by 4, t by 2, 3t by 4 and t. These represents how the current is varying sinusoidally or with a cosine function. Now
for the calculation of average or mean value of alternating current for half cycle. Now, we want to discuss how we can calculate the average or mean value of alternating current for the half cycle during the AC current travelling. Now, again dear students, we want to confirm, we want to learn first what is a average or mean value of current. Yeah, what is the use of average or mean value of current? As I have said earlier, because AC is varying with the time, so we are in need of a average value or a mean value for our calculation point of view, so that we can use them in a numerical question or numerical problem. Now, here in the slide, I have defined the average or mean value. The average or mean value of alternating current is defined as that value of steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle, that is from t equal to 0 to t equal to t by 2, as is sent by alternating current through the same circuit in same time. I am repeating again, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ इसे. The average और mean value alternating current की डिफाइन की जा सकती है कि ये वो करंट है, वो स्टडी करंट है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजती है सर्किट में आधे साइकिल के लिए, फॉर द टाइम फॉर द हाफ साइकिल 0 टू t by 2 एज इट इज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि अल्टरनेटिंग करंट किसी दूसरे सेम सर्किट में भेज सकती है. सो द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आई एम और आई एवरेज. तो इन्हें हम दो सिंबल से शो कर सकते हैं, या तो आई एम लिखेंगे या आई एवरेज, ए बी फॉर एवरेज, एम फॉर मीन. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट दिस मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ current for half cycle. Let us see step by step. Let an alternating current be represented by the equation I equal to I0 sin omega t. जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम करंट की इक्वेशन को I equal to I0 sin omega t से रिप्रेजेंट करते हैं, where omega is angular speed and t is any time. I0 and I0 is a peak value of current, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है. If the strength of current is assumed to remain कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल टाइम dt, अगर हम ये मान लें कि जो करंट है एक पर्टिकुलर टाइम dt के लिए बहुत मतलब लगभग ये फिक्स है या कांस्टेंट रहती है, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड. तो अगर ये हम मान के चलें कि फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt के लिए करंट कांस्टेंट रहती है, तो हम dt टाइम में करंट कितना चार्ज फ्लो होगा सर्किट में ये सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन dq इक्वल टू आई डी टी, dq इक्वल टू आई डी टी से, विच इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 2, वेयर q इज अ चार्ज, I is a current and t is a time. And dq here means I mean to say is that we are calculating a small amount of charge in a small interval of time. Then if q be the total charge sent by AC in the first half cycle. Now let us find out if q be the total charge sent by AC in फर्स्ट हाफ साइकिल. अगर आधे साइकिल में AC के आधे साइकिल के लिए टोटल चार्ज Q हो जो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t बाई 2 टाइम तक हमें मिल रहा है, देन इट कैन बी फाइंड आउट बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2. तो नाउ लेट अस इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 2 विच गिव्स अस q इक्वल टू 0 टू t बाई 2 इंटीग्रल dq. तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ dq फ्रॉम इक्वेशन 2, this equation becomes equal to 0 to t by 2 I dt. Now by putting the value of I as from equation 1, we can have this q equal to integral 0 to t by 2 I0 sin omega t dt. Here I have put the value of I from equation 1, because 1 from equation 1 we have been given I equal to I0 sin omega t. Now by solving this equation further, q is equal to 0 to t by 2 integral I dt. Since I is given I0 sin omega t, so integral will become q equal to 0 to t by 2 I0 sin omega t dt. So if we solve this equation with this formula,
then q equal to I0 in a bracket minus cos omega t divided by omega bracket close from 0 to t by 2. Now it becomes q equal to, with the minus sign, minus is I have taken outside, I0 upon omega in a bracket cos omega into t by 2 minus cos omega into 0. So, dear student, I have applied here the upper limit. In place of small t, I have placed t by 2 first, so that the upper limit of the integral is inserted. With the minus sign, cos omega into, at the place of t, now we will have to put 0 value. So, by solving this equation, let us see, q will be equal to, q is coming out to be equal to, with the minus sign, I0 divided by omega in a bracket cos pi minus cos 0. So, here one term more you can add is omega, we know, as we know, omega is 2 pi by t. So, we can put the value of omega 2 pi by t. By this equation, t will cancel t and we get the value of cos pi minus cos 0. In a second term, because we are multiplying cos omega by 0, that is why we are getting cos 0. Now, these two angles, as we know very well, we know the values of cos pi and cos 0. So, dear student, since cos pi, as we know, the value of cos pi is minus 1 and value of cos 0 is 1. I am repeating again, the value of cos pi means cos 180 डिग्री का मान माइनस 1 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो ये दोनों वैल्यू जब हम ऊपर की इक्वेशन में, अबव एक्सप्रेशन में इफ़ यू पुट, देन वी गेट q इक्वल टू, with a minus sign, I0 upon omega, and at the place of cos pi we are putting minus 1, then usual minus sign is coming, at the place of cos 0 we will put 1. So, in this way we are getting I0 upon omega in a bracket minus 2. Now, we have in a bracket minus, there is a sign of negative, and in an initial point there is a sign of minus. So, these two minus will cancel each other, and the final expression we are getting is q equal to 2 I0 upon omega. Mind it, where I0 is a peak value of current. Now, by solving this equation, if we put the value of omega here, where omega is 2 pi by t, the expression becomes q equal to 2 I0 t upon 2 pi. Now, we can cancel 2 by 2, then the final expression coming is I0 t upon pi, where t is the time period of the AC cycle we are dealing with. So, I may remind you, time period is that time in which a AC cycle completes one complete cycle. Then, if you see from the definition, we have told you earlier, if Im represents the mean value or average value of alternating current over the first half cycle, then we can write. Here this line explains that अगर हम Im को AC एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को Im से शो करें, तो उस Im को फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम किससे दिखा सकते हैं? एज अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन it was Im into t by 2, means if current is multiplied by total time for the half cycle. It is very clear from the previous definition of charge, as we know चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम. तो उसी करंट, अब करंट की जगह हम क्या लेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट लेंगे हाफ साइकिल के लिए, जिसे हम Im से शो करते हैं. सो देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू Im इंटू टी बाई 2. दिस इज फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल. देन अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 4 वी वांट टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ Q and we put the value from equation 3 in equation 4, so we are getting Im into t by 2 equal to I0 into t upon pi. So, from this expression t may be cancelled from both sides, therefore, Im will be equal to 2 I0 upon pi. Therefore, we are getting Im by solving 2 upon pi factor. As we know 2 को अगर हम पाई से डिवाइड करें, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, तो 2 बाई पाई को सॉल्व करने पर 0.637 आता है. तो इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन को या तो हम
आई मैंने स्लाइड में बोल्ड किया हुआ है ये, तो आई एम इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई. दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल. बट in a more simplified way we can say Im is equal to 0.637 times of I0, where I0, as we have discussed several times, is a peak value of current for the AC cycle. Therefore, the in resultant we can say, hence mean or average value of alternating current over first half cycle is 0.637 times the peak value of AC. So here we can give the definition like this: mean or average value of alternating current पहले हाफ साइकिल के लिए 0.637 टाइम्स होता है पीक वैल्यू ऑफ एसी का. तो ये फॉर्मूला हम किसी भी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. नाउ आई मे फाइंड आउट दैट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करेंट फॉर कंप्लीट साइकिल. माई क्वेश्चन इज, माई टॉपिक इज नाउ कि हम किस, जेहेतु ये तो हमने अभी जो सॉल्व किया ये हाफ साइकिल के लिए था. नाउ डियर स्टूडेंट, आई वांट टू सॉल्व, आई वांट टू मेक यू लर्न कि हम पूरे साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ टू सॉल्व दिस फॉर कंप्लीट साइकिल, लेट अस फर्दर कैलकुलेट इन अ वे एज द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल इज टेकन एज Im equal to 0.637 times of I0. I am directly calculating it. जैसे कि हमने पहले हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम टाइम व्हेन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t/2 के लिए ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ था. हाफ साइकिल के लिए Im कितना आता था? 0.637 टाइम्स ऑफ I0. नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल इफ वी गो एंड कैलकुलेट the average value of current for the next half cycle, that is for the time t इक्वल टू t/2 से t इक्वल टू t तक. तो हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव आता है. तो Im इज कमिंग इक्वल टू माइनस 0.637 टाइम्स ऑफ I0. दिस इज ऑल्सो यू कैन वेरीफाई विद द कर्व, AC कर्व, बिकॉज कर्व इज ट्रेवलिंग या AC is traveling in positive half and negative half. When we are calculating first half of AC, it is going in positive direction. When we are calculating negative half of the AC, it is going in negative direction. That's why one component या one factor is coming positive, another factor is coming negative. So we need not to solve it again by the integral method. तो हम पहले हमने आधा साइकिल के लिए ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऐसे ही आधा साइकिल के लिए हम नेगेटिव के लिए सॉल्व करें तो मीन और एवरेज वैल्यू AC साइकिल की कंप्लीट साइकिल के लिए कैन बी सॉल्व एज Im इज इक्वल टू प्लस 0.637 टाइम्स ऑफ I0 माइनस 0.637 टाइम्स ऑफ I0 एंड डिवाइडेड बाई 2. तो दिस इज द सेम मेथड डियर स्टूडेंट. जैसे कि हम किसी का एवरेज निकालना और दो वैल्यूज हमें पता होती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स. दिस इज वन मेथड फॉर एवरेज. और सेकंड मेथड हमने अभी हाफ साइकिल के लिए निकाला था, इंटीग्रेशन मेथड से निकाला था. तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि हमें दो वैल्यूज़ पता है, फर्स्ट हाफ साइकिल वी नो, सेकंड हाफ साइकिल वी नो. फर्स्ट हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, सेकंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव. तो हम दोनों को ऐड करें, देन डिवाइड बाई 2. इट विल गिव यू द mean or average value of current for complete cycle. But because of in a negative half cycle we are getting the average current with the minus sign, so plus की जगह हम minus लगाएंगे. तो 0.637 times of I0 minus 0.63 times of I0, it will give you 0 value. When 0 is divided by 2, again you are getting 0. So in this way the average or mean value for complete cycle in during a AC current or voltage comes out to be is 0. So we can say that average value of current or average value of voltage for a complete cycle vanishes or it will give you the 0 value. Here similarly we can further explain the same thing for the voltage. अभी तक हमने सिर्फ ये करंट के लिए सॉल्व किया था, यही चीज़ हम बिल्कुल डिट्टो या सेम पैटर्न से, सेम मेथड से हम वोल्टेज के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं. द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग एज शोन इन द स्लाइड हियर, द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज
for first positive half cycle of AC is, again for the half cycle it is E0, yeah, it is shown by EM or E average, which is coming out to be equal to EM equal to plus 2 E0 upon pi, or by solving it we are getting plus 0.637 times of E0. And for the negative half cycle of AC, so negative means I mean to say for the rest half cycle means from time t equal to t by 2 से t तक. पहला हाफ का मतलब है टाइम t इक्वल टू t by 2 0 to t by 2 तक. सेकेंड हाफ मीन्स t इक्वल टू t by 2 से कैपिटल T तक या टोटल टाइम तक, तो उसे हम नेगेटिव हाफ साइकिल भी कहते हैं. तो अगर हम उसके लिए कैलकुलेट करें EM मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो इट इज़ कमिंग EM इक्वल टू विद द माइनस साइन 2E0 अपॉन पाई, देन again is equal to minus 0.637 times of E0. Here further I may tell you E0 is a peak value or average value of voltage. So average value of alternating voltage over one complete cycle will be, here further the same calculation. अगर हम वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए फिर से टोटल साइकिल के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज और मीन वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमें जीरो वैल्यू देगा बाय सॉल्विंग द इक्वेशन एज average is given by the current voltage for first half plus voltage for second half divided by 2. So then we are getting plus 2 E0 upon pi minus 2 E0 upon pi overall divided by 2. So in this way we are getting average or mean value of voltage as equal to 0 further. So either it is current or it is voltage. In both the cases average values is coming out to be 0 for complete cycle. But for half cycle it was either 2E0 upon pi or 2I0 upon pi. These two values are to be remembered very hard because these are going to be used in a numericals, in a questions to be come later. Here I have given some note here in this slide. Ordinary DC ammeter and DC voltmeter cannot measure alternating current and voltages because average value of current or voltage over a full cycle is 0. Now I want to explain something here. I want to give a message here over here is ordinary DC ammeter and DC voltmeter, because we are dealing with student, we are dealing with the AC here. So DC ammeter or DC voltmeter cannot measure alternating current and voltage. What is the reason? Reason behind is because average value of current or voltage over a full cycle is 0. Or in other words, you can say because AC is varying all the time and DC is meant, DC instrument are meant for measuring steady current or steady voltage, and we don't get in a AC. So ordinary DC ammeter and DC voltmeter cannot measure alternating current and voltage because average value of current or voltage is for a complete cycle it will become 0. Now alternate method for calculating average or mean value. This was one way. Secondly, in a second way you can also solve the average value or mean value over one complete cycle by the direct method, by the integration method. So as shown in a figure is Im or average value is given by 1 upon t 0 to t integration I dt. So this expression is coming from a total charge divided by total time. So dear student, as we know current is equal to charge by time. So because charge is not here steady one, तो हम चार्ज को क्या करें, इंटीग्रेट करें कंप्लीट साइकिल के लिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दें. तो हमने इस एक्सप्रेशन में IM निकालने के लिए 1 अपॉन टी इक्वल टू 0 टू टी आई डी टी से शुरू किया है. बिकॉज वी नो, सिंस वी नो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी एज प्रीवियसली टॉट सो मैनी टाइम्स, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें आई की, तो इट विल गिव यू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी, where omega is the angular frequency. Now by solving this integration 0 to t sin omega t dt, further we will solve that the sin omega t as previously given, it will give you minus cos omega t upon omega. By putting the values upper limit and minus lower limit, minus I 0 upon omega t cos omega t 0 to t. By putting the values upper limit and lower limit
as cos 2 pi is will give you 1 and cos 0 is, तो cos 2 pi we mean to say is 360 डिग्री, तो 360 1 होता है और 0 भी 1 होता है. अगर हम दोनों वैल्यू पुट करें तो I m in this way is coming 0. Now I want to discuss 2 or 3 questions, MCQs questions. The question number 1 is the average value of alternating voltage for half AC cycle is given as A 0.637 E0, B E0 upon pi, C 3 E0, D E0. Dear student, you are well aware of the in the text or in the during the lecture I have given the answer is 0.637 E0. Question number 2 is if the instantaneous current in a circuit is given by I equal to 4 cos omega t plus 9 in amperes, the mean value of current for half cycle will be. So as we know the formula for average or mean value for half cycle was 2 I0 upon pi. So by comparison of first this equation I0 is 4. So if we put the value it will come 8 upon pi. So answer A is correct. So student, this was all about my second lecture. Thank you.